Good evening, all. How are you? Now, today I'm going to take a very light discussion on diabetes itself, that how binge eating can be harmful for a person who's diabetic and also for your health. Earlier, my talk was on diabetes itself, but it was more concentrated on the effect of weight reduction and dietary modifications on reversal of type 2 diabetes. That was like something which was an update on why you should not be medicating yourself, uh, you know, just after getting diagnosed with high fasting or postprandial blood glucose. You should actually pay attention to various other parameters also, like your weight, your lifestyle, your diet. After you think that there is some problem in these things, so you make some modifications, get retested, and then make yourself confirm that you are becoming or you have become diabetic. And if you have become also, then there can be reversal of it. So there's nothing to be worried or scared of. That was my talk. So I want to ask you one question. Are you called or labeled as a junkie who goes on eating 5 to 6 times a day? You think you are hungry and you start snacking, and then you feel like it's fine, as I work so much, so I need this much calories. Well, most of the time you are eating like a greedy monster, hungry more, and you are actually consuming processed food, packaged food, and mostly more of simple sugars or carbohydrates. So, what are simple sugars? Simple sugars are actually those which are very readily absorbed in the small intestine. They don't reach the large intestine where there are the good bacteria. They are hungry for fibers, complex carbohydrates. If you're not getting them in the diet, you're not giving them in the diet, then these hungry bacteria, the good bacteria, will actually secrete certain chemicals which will, you know, make changes in your body. Might be you're not in a good mood, you will be having some health issues. So all this relates to what you're eating. So it's very, very important that cut down the simple sugars. Don't be panicked or scared or say totally no to things like this. Okay, moderation is the key to a healthy lifestyle, a healthy body. So you have to know that at what you know age, at what time, then in what quantity I have to eat a particular kind of food. If you are having a sweet tooth, you want to indulge in something sweet, then you can, but not very frequently. So just try that you don't incorporate more of simple sugars in your diet, but instead you take more of complex carbohydrates. Now, uh, so what you are actually doing is not giving rest to your pancreas. Okay, so what your pancreas will be doing will be that if you're eating more of simple sugars, the pancreas getting a constant hit that, oh, there's so much of glucose, 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 glucose. I need insulin. God damn it, regulate my glucose, please. Secrete insulin. My glucose has to be absorbed, has to be used, has to be stored. I don't want high glucose in my circulation, please. And what the pancreas has to say, oh my goodness, you're making me work so much. And the pancreas will be like, working like a scolded husband scolded by his wife to do something, and the husband goes on doing that. So it's like that. So the pancreas get exhausted completely. They think that it's yes useless, like I'm secreting the insulin, but god damn it, their high glucose not coming down. They're eating so much of simple sugars and all, they're not taking care of themselves. So more insulin whole day, so you are in a hyperinsulinemic state. So what I'm referring to now gradually is that how you become insulin resistant or type 2 diabetic over a period of time. The main problem is with your insulin. Now this will be something which will make your brain rolling and quite twisting what notions you had earlier in your mind, that is totally the glucose who's playing the role of a bandit queen. No, you are totally wrong. The main culprit, the main dacoit here is your high insulin levels. When you are for a long period of time consistently having high insulin because of high carbohydrates, simple sugars you're putting in your body,
in your circulation, that hyperinsulinemic state then gradually makes the tissues insulin resistant. And on top of that, the cherry on the top of that icing, the work of cherry is done by your heavy weight, or you can say by your you know uh, you can say more of kilos you are carrying. So if you're obese, then that adds up to your problem. Okay, so it is like hyperinsulinemia leads to insulin resistance. Something which is very high, makes your body react accordingly. So suppose you have a high inclination towards eating uh, sugary foods, sweets. So a level will be there that you won't be satisfied with that amount of sugar. You will require more of it. So gradually your body becomes resistant to that amount. So this is the same thing. Like when more insulin is being secreted consistently, then the body actually stops responding to it. It becomes insulin resistant. And this insulin resistance then gradually leads to your high glucose levels and you become diabetic. Okay. And the main problem with the underlying cause for this is that you are eating simple sugars more, carbs more. It's not the fats which are making this creating this havoc or problem. It's all the carbohydrates which are creating this problem. Okay, so this you have to just understand. So what happens is the HbA1c level will not be in a normal range. When you get your HbA1c levels checked, you have some symptoms and you think like, I should get my sugar checked, my HbA1c level checked, go for some body profile, and you find that the levels are abnormal and you get an average blood glucose like mean of 3 months, and that is on the higher side, then you have to take care. But over a period of time, this hyperinsulinemic state makes you insulin resistance, and you develop impaired glucose tolerance and then diabetes mellitus. Now, according to me, the American Diabetes Association has given this concept of impaired glucose resistance, this glucose tolerance, and pre-diabetic. I don't think there is a condition like pre-diabetes. It's the factors which make you prone towards diabetes, but there's nothing like half diabetes. Okay, when you come in the section of impaired tolerance to glucose, when your circulation is having higher than normal glucose, you are definitely at the verge of becoming diabetic. Okay, reversal is possible when you aggressively and with a strong willpower practice or change things which really are bringing this problem to you. Okay, so it is like nothing half is there, nothing half diabetic is there, but you are actually going to become diabetic if you are having an impaired glucose tolerance most of the time. Okay, so the eating habit, eating frequently is not good for your gut, and actually it's not expected by a gut also that frequently you will be eating and frequently the bacteria will be getting food. It's only in your mind. What happens is when we start binge eating, like we feel like eat after 2 hours 3 hours. Okay, चाय पी रहे हैं तो उसके साथ कुछ स्नैक ले लेते हैं, फिर देन वील हैव डिनर. आफ्टर डिनर ओके लेट्स हैव सम आइसक्रीम, यार फ्रिज में पड़ी है चलो खा लेते हैं. मॉर्निंग में उठे चाय का मन नहीं है, चलो चाय बना ही दो, ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ी मीठी हो गई पी लेते हैं, नो प्रॉब्लम, फोर्स कर रहे हैं पी लेते हैं, पी लिया, चलो एक टोस्ट ला दो, एक दो खा लेते हैं, चलो ऐसा करते हैं यार आई नीड एनर्जी फॉर द होल डे, मतलब लंच तक तो एनर्जी चाहिए, तो मुझे ब्रेकफास्ट थोड़ा अच्छा सा हैवी बना दो, ठीक है खा लेता हूँ तो थोड़ा मुझे एनर्जी रहेगी. लंच हो गया, लंच टाइम आ गया, ओके यार लंच टाइम है तो लंच तो करना ही है ना. ओके, सो इट्स नॉट लाइक कि कुछ चीज़ फिक्स्ड है तो आपको उस टाइम खाना ही है, या आपको लग रहा है कि ये टाइम पे मैं थोड़ा फ्री हूँ, थोड़ा एन्जॉय करूँ, कुछ खा लूँ. सो एवरीथिंग इज़ लाइक you have tuned the brain accordingly, that's why it's responding that way. But your gut doesn't require so much of calories, so much of eating frequently. And I will not say that eat breakfast like a king,
eat lunch like a, I think, queen, and eat dinner like a pauper, like a beggar. No, there is nothing like that. Eat breakfast like a beggar, and then eat lunch like a king, and eat dinner like a super beggar. Do you understand what I want to say? See, if you feel hungry, then you eat heavy breakfast. Otherwise, I think fruits or something light will be fine for you. Lunch, you can have a variety of good food which can give you fiber, which can give you some moderate amount of fats, fermented, some food incorporated in it, salad incorporated in it, so you can have that. Okay, and then in the evening, if you're not feeling hungry, go for something light, and very early. Please try to eat around 7 or 8, and have a gap of 12 to 14 hours. Okay, so this is very important, that at what time are you eating at the night the dinner, and how much gap you're keeping between the dinner and the next day your breakfast. Okay, you have the craving to eat whenever you are idle or in between, so it's actually not required by the body or the gut. So don't train your mind that this at this time I have to eat. It's totally an intuition, it's totally a feeling that you are having. It's nothing like the body is requiring it. Or if you're not going to eat, then something will happen, disastrous will happen to you, nothing will happen to you. So first will be a bad habit which you have to stop doing is junky attitude. Please shun that junky attitude. Then I don't believe you have to eat breakfast like that. I have already discussed that nothing like such a thing like breakfast should be very, very heavy. According to your body, according to your energy demands, you eat food or divide it into these three parts. Okay, that is breakfast, lunch, and dinner. Then you can have fruits and nuts also. Nuts are also good in the morning. Okay, for lunch, again, I would say that avoid gluten डाइट, दैट इज़ रोटी वीट की खाने की बजाय आप खाइए बाजरा की, मक्की की, जौ की, ज्वार की, मिक्स पल्सेस खाइए. तो इस तरीके से आप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट डालिए. रिफाइंड फ्लावर, वेजिटेबल ऑयल, सीड ऑयल्स को बिल्कुल मना करिए. थोड़ा बहुत खाइए या फिर ऑयल्स चेंज करते रहिए सो दैट यू गेट अ कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. कंटिन्यूसली पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आप जो खाओगे, वो जो आपको फैंसी लेबल्स दिखते हैं ना कि ये सफोला, इसमें हार्ट बना हुआ है, ओके इट विल कीप योर हार्ट हेल्दी, लो मैं खा लेता हूँ, चलो मुझे तो हार्ट अटैक आने वाला भी नहीं है, मैं पूरी ज़िंदगी हेल्दी रहूँगा ये ऑयल खा के. तो ठीक है, तो इस कंपनी के गिमिक्स में मत जाइए, फैंसी वर्ड्स पे मत जाइए, फैंसी पब्लिसिटी पे मत जाइए. अपनी बॉडी को देखिए. जो भी ट्रेडिशनली फॉलो होता था बेस्ट था. घी खाते थे, घी में खाना बनाते थे. ठीक है, और ऑयल्स भी ऐसे थे जो टोटली ये सीड्स ऑयल नहीं थे, मोनो अनसैचुरेटेड थे या सैचुरेटेड फैट्स थे. तो इस तरीके से आप इनकॉर्पोरेट करो डाइट में. डोंट टेक टोटली द रिफाइंड ऑयल्स. ओके, सो strict no to these refined polyunsaturated fatty acids or oils and a strict yes to ghee. घी को वापस ले आओ अपनी किचन के अंदर, अच्छे से खाओ विदाउट एनी काइंड ऑफ अ स्केयर. घी आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा. हर चीज़ लेकिन मॉडरेशन में हो प्लीज़. वो चीज़ मुझे कहनी पड़ रही है बिकॉज दिस हैज़ टू बी अंडरस्टूड दैट एवरीथिंग शुड बी इन मॉडरेशन. What is the problem with the polyunsaturated fatty acids? Now you will say ki why I am saying don't eat. There is one problem. There are many problems because of that one problem. Polyunsaturated fatty acids और unsaturated, कोई चीज़ अगर satisfied नहीं है तो वो क्या कहेगी, मुझे चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए. छीनेगा आपसे ना कुछ, तो आपकी बॉडी के अंदर भी छीनता है वो. ठीक है, हाइड्रोजन आयंस को, ये मैं अनसैचुरेटेड हूँ, मेरे इस अनसैचुरेशन को ख़त्म करो, मुझे सैचुरेटेड बनाओ. स्नैच करेगा दूसरी टिश्यू से, सेल्स से और मॉलिक्यूल से वो एटम्स को और हाइड्रोजन आयंस को. तो क्या होगा, वो दूसरे फ्री रेडिकल्स बनाएगा. ये चेन रिएक्शन चलेगा जब तक कि वो ब्रेक ना हो. और ऑलरेडी आप डिजीज़ पर्सन हो, आपकी बॉडी में वैसे ही फ्री रेडिकल्स हैं. एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है क्योंकि डायबिटीज़ एक प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेट होता है हमारी बॉडी में, वैसे ही फ्री रेडिकल्स होते हैं ज़्यादा. और एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम इतना ज़्यादा कॉम्पनसेट नहीं कर पाता कि वो फ्री रेडिकल्स को सबको स्कैवेंज कर दे या कि नॉन फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर दे.
तो अब आप और फ्री रेडिकल भी डाल रहे हो, वैसे ही स्ट्रेस्ड बॉडी है उसमें और फ्री रेडिकल प्यूफा ऑयल लेके डाल रहे हो, तो क्या होगा, फ्री रेडिकल स्ट्रेस बढ़ेगा जिसको हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं, और वो फिर आपकी इन्फ्लेमेटरी स्टेट को और बढ़ाएगा और आपको जो है कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस में भी इट कैन लेंड थ्रू दीज थिंग्स. ओके, सो अंडरलाइंग प्रॉब्लम इज़ फ्री रेडिकल को जनरेशन को स्टॉप करना है. कभी भी डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, तो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कम लो, वेजिटेबल ऑयल, सीड ऑयल्स नहीं लो, और स्ट्रेस भी मत लो, और अपनी लाइफस्टाइल में कुछ मॉडिफिकेशंस लाओ, वेट रिडक्शन करो, इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, फाइबर रिच डाइट लो, फर्मेंटेड फूड लो, पैकेज प्रोसेस फूड को मना करो, सिंपल शुगर्स को मना करो. आप बहुत अच्छे रहोगे, हेल्दी रहोगे. 15-20 मिनट वॉक कर लो, कुछ एक्सरसाइज कर लो, ज़्यादा नहीं करना है तो एटलीस्ट एक वीक में 3-4 दिन कर लो. कंसिस्टेंट रहना है तो 15-20 मिनट ही वॉक कर लो सुबह शाम. थोड़ा सा अपना रूटीन में ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट करो, यू विल सी द मैजिक हैपन्स. सो नाउ व्हाट इन द इवनिंग, वेल ट्राई टू अवॉइड स्नैकिंग, वो हमने डिस्कस कर लिया था. देन ईट बिफोर सनसेट, ट्राई टू, बट इट्स डिफ़िकल्ट. बट जैसे मैंने आपको बताया 7 o'clock से 8 o'clock के बीच खा लो, तो सुबह आप जब खाते हैं तो 12-13 घंटे का गैप आ जाता है, दैट्स इनफ. ओके, यू कैन प्रोलॉन्ग द गैप, दैट डिपेंड्स ऑन यू. एंड द बेस्ट प्रैक्टिस and to keep yourself healthy and free from the disease trap is intermittent fasting and ample hydration. ample hydration कैसे करेंगे, पानी पीते रहना है, ये नहीं कि प्यास लगे तब पीना है. लेमन जूस पीते रहना है, सिंपल, बिना शुगर नमक के पानी में बस आप डाल दो, वार्म वाटर में स्क्वीज़ करो लेमन को. छाछ पीना है आपको, बटर मिल्क, ठीक है. जूस ज़्यादातर मैं कहूँगी अवॉइड ही करो, जूस बनाने का कोई मतलब नहीं है, फाइबर नहीं जाता है. तो जस्ट हैव फ्रूट्स लाइक दिस, ऑरेंजेस को ऐसे ही खा लो, ठीक है. तो बस वेल हाइड्रेटेड रहो, मॉइस्ट फूड बनाओ, कुकर में बनाओ, स्टीम्ड बनाओ. एयर फ्रायर भी मेरे ख्याल से यूज़ नहीं करना चाहिए फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू. एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा ड्राई नहीं करें, ज़्यादा उनको फ्राई ना करें. जितना हो सके बॉडी में ना ये सब तली भुनी चीज़ें कम कर दो. लेट द गट हैव अ पीरियड ऑफ रेस्ट, तो रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है. इंसुलिन सर्ज को हम एक्चुअली कंट्रोल में रखना है. मेन इंपॉर्टेंस क्या है कि खाते खाते रहोगे तो इंसुलिन बनता ही रहेगा ना, तो इंसुलिन को हमें ना बनने नहीं देना है, और अपने सर्काडियन रिदम के अकॉर्डिंग चलो, यानी आपका जो स्लीप वेकअप साइकिल है उसके अकॉर्डिंग करो. खाना तब खा लो जब आप नींद में ना हो, तब तो ना खाएं प्लीज़. तो आपकी बॉडी को नींद चाहिए ना, उसके हिसाब से पहले से खा लो खाना, तो आपकी जो स्लीप साइकिल है वो रेगुलेटेड रहे. तो आपके जो उस टाइम रात में जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, कॉर्टिसोल है, दूसरे हार्मोन्स हैं, वो आपकी बॉडी में इतना स्ट्रेस पैदा नहीं करें कि वापस से आप वो हाइपर इंसुलिनेमिक स्टेट में आ जाए, ठीक है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्जिविटी, टू प्रिवेंट डायबिटीज़, ओबेसिटी, एल्जीमर्स, डिप्रेशन, साइकोसोमैटिक डिजीज़ेज़, फैटी लिवर, वेरी इंपॉर्टेंट. फैटी लिवर बहुत हो रहा है, यंग स्टूडेंट्स, यूथ के हो रहा है. फैटी लिवर इज़ द अंडरलाइंग कॉज ऑफ वेरियस इश्यूज़. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ से आप दूर रहोगे, इरिटेबल बाउल डिजीज़ से दूर रहोगे. सो नटशेल में मैं ये कहूँगी 3 पॉइंट्स आप माइंड में रखिए. जंकी एटीट्यूड को नो, हरदम नहीं खाना. हाइपर इंसुलिनीमिया को चेक में रखना है. इंसुलिन रेजिस्टेंस को नहीं बढ़ाना है. इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है डायबिटीज़, सो आपको अपनी बॉडी में गार्बेज नहीं डालना, प्रोसेस पैकेज फूड नहीं डालना है, ज़्यादा प्यूफा नहीं खाना है, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड वाला वेजिटेबल ऑयल नहीं खाना है, फ्री रेडिकल जनरेशन ना हो ऐसे केमिकल्स नहीं डालने हैं. हेल्दी फूड खाना है जिससे आपके गुड बैक्टीरिया ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाएं जो आपकी मूड को भी अच्छा रखें और आपको कई तरह के डिजीज़ से दूर रखें. इंटरमिटेंट फास्टिंग करिए, हाइड्रेशन रखिए अच्छा, रिच फाइबर डाइट लीजिए, एंड प्रिजर्वेटिव्स वाले फूड से भी दूर रहिए, ठीक है. जिन फूड्स में एक मतलब वो कहते हैं ना इतनी शेल्फ़ लाइफ है, ये है, कोई भी फूड को आप ना 4-10 महीने, 8 महीने, 12 महीने नहीं रख सकते हो, प्रिजर्वेटिव तो होगा ही उसमें, तो दूर रहिए ऐसे फूड से, ठीक है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ ही नहीं खाना हमें बाहर का. इट्स वेरी इट शुड बी फ्रीक्वेंट, कभी कभार चलता है, ठीक है, चलता वाला भी एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, बट बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है अवॉइड करना. कभी कभी मीन्स कि 2-4 महीने में एक बार. अदरवाइज़ प्लीज़ एट अ सर्टन एज यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस ऑफ योर हेल्थ. एंड अगर आप कॉन्शियस रहोगे तो ही आप
लॉन्ग लाइफ जी सकते हो, हेल्दी एंड वेल्दी भी रह सकते हो, क्योंकि आप हेल्दी हो तो ही आप कुछ अच्छे से बहुत लॉन्ग टर्म तक कमा सकते हो, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। तो वाई डोंट यू वांट टू एंजॉय लाइफ फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, है ना। एंड आप ये सब चीज़ें सिर्फ अभी मोमेंट्री एन्जॉयमेंट के लिए खा रहे हो कि मुझे मज़ा आ रहा है, लेकिन बाद में तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। वो चीज़ें सब आपके जो ये एन्जॉयमेंट हो उसको ख़त्म ही कर देगा। सो बी कंसिस्टेंट इन and be focused and mindful of what you're doing, what you're eating, how you're cooking. And बहुत इम्पॉर्टेंट है, वापस मैं रिपीट कर रही हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, जंक की एटीट्यूड हटा दीजिए, बार बार खाना बंद करिए, ठीक है। इतना खाइए जो आपकी बॉडी अलाउ करे, उससे थोड़ा सा कम ही खाइए तो बेटर है। कीप सम स्पेस इन द गट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लीजिए, गट बैक्टीरिया को आप फूड दीजिए, फाइबर फूड दीजिए, तो वो हेल्दी रहेगा, ठीक है। हेल्दी रहेगा तो आपका मूड अच्छा रहेगा, आपका ब्रेन की फंक्शनिंग भी अच्छी रहेगी। देयर इज़ एन डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन गट ब्रेन, ब्रेन गट, बाई डायरेक्शनल, जो मैंने डिस्कस किया था। इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करिए। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वेट लॉस पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करिए, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करिए, बट कंसिस्टेंट रहिए जो भी करें। हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है। हाइपरटेंशन है अगर आपको, तो अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करिए, जो ड्रग्स आपको दी हैं रेगुलर लीजिए, और पानी अच्छे से पीजिए, स्ट्रेस से दूर रहें, और जितना हो सके रात को जल्दी खाना खा लीजिए, ठीक है। प्रोसेस पैकेज और बाहर का फूड अवॉइड कीजिए। सो pay attention to all these things so that you can lead a very very good healthy life, long life, without any diseases, without any problems. Okay, so keep yourself healthy, keep your mind healthy, gut healthy, and good luck.